Do you ever feel behind in life? Do you ever feel that your friends are ahead of you in terms of finances, money, the financial freedom that you are looking for, health, the relationship, or any particular goal that you desire to achieve? Do you ever feel that? And if you think, yeah, this is what I usually feel, then I want you to watch the entire video till the end. And I promise by the end of this video, you will be surprised and you will be thinking that why the hell was I thinking like this? So let's go straight into this. So first, it's important to understand that why do we really feel this way? And there's only one answer to this. That is conditioning. कंडीशनिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में कि बेसिकली हमारा ब्रेन पहले फर्स्ट 7 to 8 years में ज्यादातर ट्रांसफॉर्म होता है, ज्यादातर हार्डवायर होता है बाय ऑब्जर्विंग पीपल, बाय हियरिंग पीपल। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा होते हैं, उससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है, उससे हमारी पर्सनालिटी ओवरऑल डिफाइन होती है। सो हमारी कंडीशनिंग मोस्टली 3 सोर्सेस के थ्रू होती है: स्कूल, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो ये पर्टिकुलर बिलीफ कि हम एक रेस में है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिनिश पॉइंट है, और जहां पे हमें लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकलना है, ये फीलिंग सबसे पहले हमें स्कूल से आती है। एंड बाय स्कूल इट्स ऑल अबाउट कि हम, फॉर एग्जाम्पल, हमें एक पोर्शन दिया जाता है, हम सभी को एक पोर्शन दिया जाता है कि आप ये सारे पोर्शन पढ़ो, और फिर हमारा एक टेस्ट होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग फर्स्ट आते हैं, इनफैक्ट एक ही लोग फर्स्ट आते, एक ही जना फर्स्ट आता है, तो लोगों की रैंक डिवाइड होती है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई 10th, कोई 15, कोई 20th। तो उस हिसाब से हमें वैल्यू हमारी पता चलती है कि यार ये एक पूरी रेस थी जहां पे मैं 20वें नंबर पे आया हूँ, ये पूरी एक रेस थी जहां पे कोई पहले नंबर पे आया है। और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि आप कितने वर्दी हो एज अ ह्यूमन बीइंग। उस तरीके से हमारे टीचर्स हमें पोर्ट्रे करते हैं कि यार ये बंदा तो फर्स्ट आया, दैट मीन्स दिस पर्सन इज रियली इंटेलिजेंट। यू आर यू हैव केम 20th इन द क्लास, बिकॉज 20th को तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, बट लेट्स से आप 20th आते हो और आपको एक फीलिंग होती है कि यार मैं तो बहुत बिलो एवरेज बच्चा हूँ। सो दिस इज द फीलिंग दैट हैज बीन फर्स्ट गिवन बाय आवर स्कूल एंड हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड बाय आवर पेरेंट्स। बिकॉज स्कूल की फीलिंग ही पेरेंट्स पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि यार तू फर्स्ट आया, और तेरा फ्रेंड का क्या आया। uh, हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं। दे डोंट रियली केयर कि हमारा, हमने कितना प्रोग्रेस किया है, हमने क्या सीखा है, हमने क्या चीजें डेवलप की है अपने आप में, हमने क्या इम्प्रूव किया है। दे डोंट रियली केयर अबाउट दैट, ऑल दे केयर अबाउट इज द एंड आउटकम कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, फोर्थ आए हो, आपका रिजल्ट क्या है, आपका रैंक क्या है। और बेसिकली रिपोर्ट कार्ड में भी हमारा जो रैंक है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम कोचिंग जाते हैं, उधर भी दिखाया जाता है कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। सो स्कूल, पेरेंट्स और फिर सोसाइटी में भी जिस तरह हम बड़े होते हैं कि हमें बताया जाता है कि इस बंदे ने यूपीएससी क्रैक किया, इसका एआर ये आया, एआईआर वो आया। और ये सारी चीजें इन तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाता है कि यार हम सब एक रेस में हैं, और इस रेस में मेरा ये दोस्त आगे निकल गया मुझसे और ये दोस्त मैं पीछे रह गया। सो दिस इज द मेन रीजन हाउ वी हैव मैनेज्ड, or I would say how we have developed this belief that we are a part of a race. But the question is, are we even in a race? इसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करें। कोई भी रेस के ना, कोई भी लीगल और लॉजिकल रेस के 3 वेरिएबल्स होते हैं कि वो रेस सेम पाथ पे होनी चाहिए, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, और सभी का फिनिशिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। बट let's take a pause and let's try to be very honest with this one. Do we are we part of such are we part of a race जहां पे इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? नो राइट, बिकॉज हमारा सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हर एक जने का एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो लोगों को नहीं दिखाई देता है कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने नीचे से आया है, कैसे बैकग्राउंड रहा है, कैसे पेरेंट्स रहे हैं, कैसी अपब्रिंगिंग रही है, नोबडी नोज दैट। सो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट तो कभी भी सेम रही नहीं, और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, ना ही हमारा पाथ सेम है। कोई लोगों को सक्सेस 24 पे मिल जाता है अपेरेंटली सोसाइटी के डेफिनेशन में, और कोई लोग 30-40 की उम्र में भी स्ट्रगल करते हैं। कोई 25 वाला जो सक्सेसफुल हो गया वो 40 में वापस से बैंकक्रप्ट हो जाता है, और कोई 40 तक सक्सेस नहीं मिलता लेकिन वो पूरी जिंदगी आराम से जिंदगी काटता है। सो देर इज नो पर्टिकुलर फिक्स पाथ फॉर एवरीबॉडी, सो पाथ इज यूनिक। सो अगेन, दैट्स नॉट व्हाट
अ रेस शुड बी। रेस ऐसा कभी भी नहीं होता जहां पे 5 डिफरेंट हो, राइट? हम कोई भी रेस को उठा के देख। एंड लास्टली, क्या हम कोई ऐसे रेस का पार्ट है जहां पे कोई फिनिशिंग पॉइंट है? कभी भी कोई फिनिशिंग पॉइंट है नहीं। आप कितना ही कमा लो, आप कोई भी गोल अचीव कर लो, यू विल ऑलवेज स्ट्राइव टू अचीव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। देयर इज नो सेटिस्फाइंग फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर रेस वी आर ट्राइंग टू रन। So there's no finishing point. So the real question is, after understanding these three variables, are we really part of any race in particular? No, right? And this takes me back to my story, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा how I always felt behind in life. So I always felt like a failure. Why? Because मेरा एडमिशन बेसिकली 3 साल लेट हुआ था मेरे नॉर्मल एज ग्रुप के लोगों से। सो लेट्स से कि मैं और आप दोनों 4 साल की उम्र में हैं, दोनों हमने, यूजुअली लोग 4 साल या 3 साल की उम्र में स्कूल या नर्सरी में जाना शुरू कर देते हैं, बट लेट्स से आप चले गए, बट मैं 3 साल और वेट किया मैंने, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रोता था और मेरी माई मॉम, शी वॉज रियली सेंसिटिव, सो शी कुड नॉट सेंड मी टू एनी स्कूल और जूनियर और प्ले ग्रुप, बिकॉज शी थॉट लाइक ये भी बहुत सेंसिटिव है, सो लेट्स होल्ड हिम फॉर अ बिट, एंड जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर भेजेंगे। सो इन दैट प्रोसेस मेरा 1-2 साल निकल गए। फिर अगेन कुछ चीजें ऐसे हुई जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने रिपीट किया। रिपीट इन द सेंस कि मैंने बीच में एक सेमेस्टर छोड़ दिया था, बिकॉज वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। सो उस प्रोसेस में मैं लगभग उन्होंने एवरेज 3 से 4 साल पीछे रहा मेरे नॉर्मल स्कूल के बच्चों से। सो आई ऑलवेज फेल्ट इन माई माइंड कि यार मैं तो हमेशा से पीछे हूँ। मेरे नॉर्मल एज के बच्चे मेरे जो रहेंगे वो मेरे से 3 साल आगे रहेंगे। सो मेरे अंदर तो ये फीलिंग हमेशा बचपन से ही रही। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई रियली नो कि हाउ इट रियली फील्स टू फील बिहाइंड इन लाइफ। फिर बात आती है स्कूल की, जब मैं 4th 5th में पहुंचा। अब ये एक ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हम धीरे धीरे, हमारी हाइट ग्रो होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो मेरी हाइट तो काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी थी, बिकॉज मेरी एज 3-4 साल बड़ी थी और मैं अपने क्लास का सबसे ज्यादा लंबा बच्चा था। सबसे मेरी हाइट सबसे ज्यादा, आई वॉज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल द peers आई हैड इन माई क्लास। एंड नॉट जस्ट इन माई क्लास बट ऑल्सो द क्लासेस विच वर अबव मी, लाइक 1 to 2 क्लासेस। सो लेट्स से इफ आई एम इन 4th, तो मेरे से जो बड़े बच्चे थे 5th और 6th के, उनमें भी मैं काफी लंबा था। सो द पर्सन हु वॉज द शॉर्टेस्ट इन द असेंबली ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द हायर स्टैंडर्ड, वो मेरे पीछे ही खड़ा होता था। एंड ऑल दीज पीपल यूज टू टीज मी, यार ये तो मेरे से भी, look at him, and they used to kind of do verbal bullying. So I used to feel bad because मैं तो स्टार्टिंग से काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट था और मेरे अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस फीलिंग ऑफ फेलियर, दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग बिहाइंड वाज जस्ट मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर मी। So this is how I was for the first 18 and 19 years of my life. And then I decided कि भाई, this is not how I should be. I worked on my communication skills. I built some good habits. And because of that, मैंने काफी ज्यादा confidence build up किया. But lately कुछ ऐसी चीजें हुई जहाँ पे we were struggling with a lot of money, and till date we are. But the point is, वहां पे I used to look up to, these days how social media is working. Like all these people are, everybody on the social media, they show their success, that look at me, how well off I am, how wonderful I'm doing in my life, how successful I have become. So all these influencers, so-called influencers, when they were showing these stories, these posts, then these posts also used to give me this feeling, yeah, look at them, they have achieved what they wanted to, and that too way ahead, way early than me. So in spite of doing really well, in spite of, you know, building that confidence, अभी जब ऐसे फेस के थ्रू मैं जा रहा हूँ, तो when I look at them, I definitely feel like I am behind in life. And so do you, because social media एक one of the main root causes है, main sources है ये feeling को निकालने के लिए. So I kept on comparing myself in my 20s to the people who got early success according to me. So this was how so far I was feeling कि I am really behind in life. But now let's understand कि यार इसका solution क्या है. First of all, we realize कि यार ये कोई रेस तो है नहीं जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमसे कोई आगे है और कोई हमसे पीछे है और कोई उससे भी आगे है. नो, बिकॉज कोई भी रेस के 3 वेरिएबल होते हैं और क्लियरली हम जिस जर्नी में है वहां पे ये तीनों वेरिएबल अलग है. ना तो हम सेम बात पे हैं, ना हमारी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ना कोई फिनिशिंग पॉइंट है.
So definitely we are not part of a race. So let's understand कि अब इसका solution क्या है. And these are the three things which I go back to again and again when I have this feeling of feeling behind in life. First of all, always know the context before comparing. So let's say I see a social media influencer who is doing really well in terms of finances, in terms of the life he's living, in terms of the kind of life we want to live, that person is already living. So there's no doubt कि हमें वो inferiority complex होगा in term कि यार ये बंदे ने तो already achieve कर लिया जो मैं achieve करना चाहता हूँ. So there's no doubt कि वो feeling नहीं आएगी हमारे. But before that, before we go into that feeling of constant complaining and constantly telling ourselves that we are a failure, we should always ask ourselves, कि do we really know the context? And by context, I mean, हमें उनका starting point पता है कि उसने कब शुरू किया था, क्या हमें उसका पाथ पता है कि उसने क्या क्या धक्के खाए, क्या क्या उसने sacrifices किया, क्या क्या failures उसके जर्नी में है. We don't really know that. किसने उसे सपोर्ट किया, किसने उसे सपोर्ट नहीं किया, how he was feeling, what was the reason why he started. हमें ये सारी चीजें नहीं पता. All we are witnessing when we see them on the social media is their end goal, is their end achievement, but the entire context is missing. So therefore, we are not the right person. We are not even eligible to say that that person has got an easy way out. No, definitely not, because every person who has achieved any amount of success in their life has got it through sheer hard work, perseverance, patience, consistency, discipline, a lot of sacrifices, and a countless numbers of failure. Nobody has an easy way out. And the people who become overnight success, they are also the people who have worked years and years and years without any significant result. So do we really know that when we are comparing ourselves with these people who seem so successful on the internet? No, right? And the people usually talking about their success are the ones who are not even successful. We don't really know that. So the entire context is missing. So even if in reality they are successful, we don't really know what was their journey, what was the starting point. And even if the people in reality who are not, we still don't know that whether this person is displaying false wealth or this person has some rented car, rented house, rented trip, uh, sponsored trip. No, right? We don't really know the context. So you get the point that before you compare yourself with anybody on the internet or anybody in your life, you should always first try to understand the context. And if you don't have the context, you don't have any right to compare yourself with the other person, because as I told you earlier, we are not in a part, we are not in a race, we are not a part of a race, because a race has three variables and all of these three variables are missing in everybody's life, so that we have no right to compare our journey with anybody. So that's the first thing I want you to go back to when you have this feeling. Number two thing is, you should always focus on what you can control. So even if let's say कि हम एक race का part, but still, is there any point about complaining or comparing ourselves with them कि यार ये बंदे ने तो इतना कुछ उखाड़ लिया and look at me, I'm nowhere close to my goals and I still feel कि I have all these doubts that whether I will be able to achieve all these goals which I have set for myself. So is there any point to feel that way? Or is there anything you can do to change the past? आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता होगा. I can bet on that कि मुझे थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए था. I feel this all the time कि मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए थी. आज मैं 25 हूँ, तो शायद अगर मैं 16-17 की एज में ये सब चीजें शुरू करता तो probably I would be really successful by this time, right? But is there any point to discuss and stress over all over these facts? Because clearly all of these things have become the thing of past and we cannot change the past. But we can certainly focus on the things that are under our control right now, are present. So always focus your energy on things that you can control, that you can change, and ignore what you cannot. That is your past, all the baggages in terms of failure or whatever success you have achieved. Let them go, because there's no point about that. Focus on what you can control. So that's the second thing which I try to ask myself, is there any point stressing over this? No, right? Let's just focus on the present moment then. So that was the second thing. Third, let me tell you, and this is something that I don't think whether you will be able to understand it right now or not, because after being part of my journey, after being on this journey of
becoming a better version of myself for the past 3 to 4 years, I've realized that pursuit is the real success, not the destination. And by that, I mean, if you have a meaningful goal towards which you are working every single day, then you are already successful. Because process is all about, life is all about the process. It's not the destination that really matters. And this might sound cliche to you, but trust me when I say this, if you have a pre-decided goal towards which you are working, you are already successful. Because majority of the people on this planet, they don't have the clarity about why exactly they are working. What is that one thought they are waking up with? But if you, on the other hand, you have a meaningful goal towards which you are working, as I said almost 3 times now, you are already successful, because the journey is what gives us the joy. No matter what destination we are trying to reach, if the journey is something that we are not enjoying, we're not going to have any amount of fun in destination. Because destination is just about that momentary feeling. It's going to give you that short-lived happiness. But the real time that has been spent, that will be spent, is will be on the journey. And if you have enjoyed your journey, nothing really matters. So focus on the process. And this is where the real happiness lies. You are already successful. Just because, as I told you, how we have been conditioned about the results all the time, we don't really give importance to the process. But if you look at any athlete, any person who has achieved any amount of success, that person will always talk about how he had always focused on living one day at a time, doing one right thing at a time, and just focusing on the process. Especially the athletes these days. If you talk about the MS Dhoni, this person has already talked about the process all the time, or whether it's Virat Kohli. All these people believe that there are certain things that you have to accept will not be under your control. Winning, the outcome is not going to be under your control, because there are a lot of factors which you cannot control, that you cannot control. So it's always better to focus on doing your best in this very moment and focus on what you can control, right? So all these three things will give you a way out of this feeling which you have in your life right now. And when I say this, I don't mean to say कि मैंने पूरा master कर लिया. Of course, I do have this feeling on several occasions, but these are the three mental models which I try to go back again and again. And this is what has helped me. And I hope if you have watched this video till now, and if you have this feeling in your life, then these three things will definitely work for you. So this is it for this video, and I hope to see you again.